Hello बच्चों, let's read the question. Dash is the reservoir of gaseous cycle. In this question, the key concept is gaseous cycles. Basically, if we talk about the gaseous cycle, these are the biogeochemical cycles. These are the biogeochemical cycles. जिसमें रिजर्वॉयर जो होता है वो मेनली हमारे ओशंस एंड एयर होते हैं, यानी एयर एंड ओशियंस. Basically, if we talk about the gaseous cycles, तो नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, कार्बन साइकिल, वाटर साइकिल, इनके कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं. व्हाट आर द एग्जाम्पल्स? नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, वाटर साइकिल, and also the oxygen cycle. These are some examples that covers the gaseous cycle, that basically covers the gaseous cycle. Due to total enormous atmospheric reservoir, gaseous cycles जो होते हैं ये bit faster होते हैं than sedimentary cycles. यानी ये कैसे होते हैं? They are bit faster than the sedimentary cycles and respond more quickly to the changes in the biosphere. जाहिर सी बात है, अगर ये bit faster होंगे तो they respond more quickly. They respond quickly. They respond quickly to the biosphere. तो basically what happens, gaseous cycles जो होती हैं help करती हैं in preparing the environmental balance. They basically help in the balance also. Now moving forward, जो हमारी gaseous cycles होती हैं basically different types की होती हैं, like water हो गया, nitrogen हो गया, carbon हो गया. तो these are some of the example, and due to their enormous atmospheric reservoir ये bit faster भी होती हैं. अब क्वेश्चन में अगर हम बात करते हैं, पूछा गया है व्हाट इज द रिजर्वॉयर ऑफ गैसियस साइकिल, तो देर इज नॉट अ पर्टिकुलर आंसर लाइक एयर और द ओशियंस, बट अगर हमसे एक आंसर देता है तो हम डिपेंड ऑन द क्वेश्चंस कि हम क्या आंसर करेंगे. बट over here there is no such options, so we can easily say that the main reservoir is the air and the oceans. In terms of air, we refer the atmosphere. We refer the atmosphere. So basically these are the main major reservoir of the gaseous cycle. So hope this is the correct answer. Hope you guys understand. Thank you.